quantum mechanics. Okay, here we can study the probability. Okay, now suppose you are present here. What is the probability in your class? Your probability in classroom is 100%. Yes or no? What is the probability outside? 0. Yes or no? What is the probability in half of class? 50%. What is the probability in 1/4? Like a 25%. Next 1/4, 25%. Yes or no? Like that. Suppose a particle in a box. This is a box system. Here is 0. Here is a. Like that, this is a one room. What is the potential here? Potential is equal to infinity. Here potential is equal to 0. Here potential is equal to how much? Infinity. मतलब मुझे बोलिए कि particle can penetrate this wall? No. Yes or no? Because this is a barrier. Okay. Means what is the potential from this to away from this one? Like this is a 0. 0 to here is a minus infinity. Okay. And 0 a to infinity. A to infinity also barrier. What is the probability inside this? A to infinity? 0. Why? Because this is a barrier. Similarly, here also 0 to minus infinity. Potential is infinity. Okay. Means particle is absent here. Particle is not present. Particle is not present means psi is equal to how much? 0. Wave function कितना होगा यहाँ? 0. Okay. 0 to a, potential is equal to 0. Particle can move inside this box. Yes or no? Means here wave function is equal to 0. Not equal. This is not equal to 0. This is not equal to 0. Okay. Similarly, here psi is equal to again 0. Why psi is equal to 0? Because here particle probability is equal to how much? 0. Particle present hoga hi nahi because here is a infinite potential. Now system is a box. In a box system, what is the wave function? Wave function is psi is equal to under root 2 upon a sine n pi x upon a. Okay. Under root 2 upon a sine n pi x upon a. Matlab this is the wave function for this particle. Okay, this quantum particle. Particle is present in box. Suppose particle is present in hydrogen atom. Then what is the wave function? Wave function is psi is equal to 1 upon under root pi a naught cube e to the power minus or upon a naught. Okay, matlab particle change in other system or system to system wave function will be changed. Yes or no? This is the wave function for box. This is the wave function for hydrogen atom. Yes or no? Now, what is the probability for finding the different region? We consider width is 0 to a, 0 to l. Okay, as you wish. Okay, or depends upon the box. Some box have the width is 0 to 2a also. Yes or no? Some box have width is minus L to plus L. Okay. Now this is a symmetric box, asymmetric box. This is asymmetric box because 0 to a. Now we consider this board is symmetric, asymmetric. Suppose axis is this one. Then this is symmetric, asymmetric, asymmetric. Okay. But we can focus here. This one is axis. Then this is symmetric, asymmetric. This is axis. This is symmetric, right as well as left. From here, symmetric, asymmetric, left and right, both are same. But this is a symmetric one. Yes or no? Means 0 to 2a is a asymmetric. 0 to a is asymmetric. Minus L to plus L is symmetric. Why? Because here we can take the origin 0. Yes or no? Minus 2L to plus 2L. Symmetry. Minus infinity to plus infinity. 0 to infinity. 0 to infinity. Asymmetric. Okay. Minus infinity to plus infinity. Minus infinity to plus infinity is symmetric. Okay. One formula here we can use is known as the gamma formula or gamma integrations. Gamma formula. What is the gamma formula? Limit 0 to infinity is must. 0 to infinity. X to the power m. A to the power minus ax to the power n dx. Okay. How to solve this integration? By using which formula? Gamma formula. Yes or no? इसलिए limits क्या होना जरूरी है? 0 to infinity. Suppose minus infinity to plus infinity, then we cannot apply the
gamma formula. Okay, what is the gamma formula? Gamma formula is equal to 1 upon n gamma m plus 1 upon n a to the power m plus 1 upon n. Okay, m means power of this x, n means power of this x. Okay, like that. Suppose limit is 0 to infinity r square e to the power minus ar dr. Okay, how to solve these integrations? By using gamma formula, comparing with this one, Okay, yes, e का इंटीग्रेशन, हाँ e का इंटीग्रेशन e to the power minus ax फॉर्म होगा, dx is equal to e to the power minus ax integration is e to the power minus ax upon minus a. Yes or no? लेकिन ये गामा इंटीग्रेशन में वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, इसमें ये कहीं भी सर्वाइव नहीं होगा. डायरेक्ट e to the power x फॉर्मूला इज दिस वन. हाँ नहीं हम ये जो इंटीग्रेशन है e to the power x इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज ये फॉर्मूला लिख सकते हैं. गामा इंटीग्रल फॉर्मूला इज दिस वन. ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ऐसा क्यों. x च्या जागेवरती नाही x इज अ व्हेरिएबल हियर. एक्सच घेतोय आपण, गामा फॉर्म्युला म्हणतो याला, गामा इंटिग्रेशन. हो, म्हणजे 0 टू इन्फिनिटी आणि अशा फॉर्मॅट मध्ये जर असेल तर वी कॅन से दिस इज अ गामा इंटिग्रेशन. आणि गामा इंटिग्रेशन असेल तर ते अशा पद्धतीने नाही सॉल्व करते ना. गामा इंटिग्रेशन इज ऐसे नहीं बोल सकते एक्स को. टोटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस वन. जैसे कि लास्ट हम देखेंगे कि इसके लिए डायरेक्ट आप मगअप करिए, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e to the power minus x square dx is equal to how much? Under root pi by a. हाँ, condition is like that, we can solve use this. हाँ, अब मान के चलिए कि लिमिट इज 0 टू सपोज a to infinity. एट दैट टाइम आप जैसे बोल रहे हैं इसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं. सपोज मान के चलिए कि r square e to the power minus ar dr. At that time you cannot use this method. At that time you can use by parts methods. Okay, at that time you can take the r square differentiation e to the power minus ar integration. लिमिट्स पे डिपेंड होता है. या लिमिट इसीलिए मैं बोला गामा फॉर्मूला यूज कहाँ करना है, जब हमारे पास लिमिट क्या होना चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए. हमारे पास लाइक a टू इन्फिनिटी है, वी कैन नॉट अप्लाई द गामा इंटीग्रल फॉर्मूला. लाइक दैट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तभी भी हम गामा इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. लेकिन जब हमारे पास यहाँ फंक्शन जो है इवन हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी. मतलब इवन फंक्शन है, इसका मतलब क्या, हम सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस और नो? तो मान के चले कि सिस्टम इज लाइक दैट, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स सपोज. ठीक है, या तो हम गामा इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. यस और नो? लेकिन गामा इंटीग्रल फॉर्मूला हमें यूज करना है तो लिमिट क्या होना चाहिए, 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए. यस और नो? नाउ दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक असिमेट्रिक. What is the condition? Symmetric, asymmetric. F of minus x is equal to f of x. F of minus x is equal to f of x. Then function is symmetric function. Okay, function is symmetric function. And f of minus x is equal to minus f of x. Then function is asymmetric function. Like that, cos and sine. Okay, cos function. Cos function is like that. Suppose this is the origin. अब देखिए इस एक्सिस से दोनों साइड वो सिमेट्रिक दिख रहा है. ओके, साइन फंक्शन असिमेट्रिक दिख रहा है, या ऊपर दिख रहा है या नीचे दिख रहा है. ओके, मींस f of minus x is equal to minus f of x. Like that function f of x is equal to suppose x square. Is even function, odd function? Power is even function. Power is odd function. Okay, now f of x is equal to, we can write on the x is replaced by minus x. Then this is equal to how much, minus x bracket square. Okay, this is equal to how much, minus 1 square into x square. Minus 1 square plus 1. Okay, into x square. Means f of minus x is equal to how much, f of x. Means given function is even. Okay,
and suppose f of x is equal to x cube, f of x is equal to x cube, then f of minus x is equal to minus x cube. ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? f of x is equal to minus 1x into minus 1x bracket square. Okay, minus 1 into x minus 1 square into x square. Okay, x as it is x square, x to the power of 3 minus 1 square plus 1 into minus 1 minus 1, मतलब x to the power minus 3. मतलब this is the odd function. Yes or no? Then f of x is equal to or limit is minus infinity to plus infinity x square e to the power minus ax square dx. Given function is even or odd? Even function, odd function. How we can say this is a even function? Suppose function is this one. Any function, limit is minus infinity to plus infinity. Minus infinity to plus infinity. Suppose cos function. This is minus infinity to plus infinity. This function हम ऐसे लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ 0 to infinity. लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? Because this is a symmetric one. Yes or no? Part is like that. Here is a minus a, here is 0. Sorry, here is a plus a, here is a 0. तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? टू टाइम्स ऑफ 0 to ये लिख दिया तो चलेगा? Yes or no? This is possible only if function is symmetric one. Yes or no? Symmetric है तभी तो हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ. ओके, ये बोर्ड है. Suppose here this side is this value is a minus a, here is a 0, here is a plus a. हमें 0 to ये लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं हम? टू टाइम्स ऑफ 0 to ये लिख दिया तो चलेगा? Yes or no? Because here this side is minus a to 0, 0 to plus a. मतलब this is nothing but टू टाइम्स ऑफ 0 to a. लेकिन वो असिमेट्रिक है तो इसको नहीं लिख सकते हम. Yes or no? Function is asymmetric, we cannot write down the two times. Like that sine function है तो उसको टू टाइम्स नहीं लिख सकते. अरे समझ में? See here. Similarly, x square e to the power minus ax square. लिमिट कहां से कहां है? मतलब ये जो नेचर है वहां माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जो भी सेम रहेगा. लाइक दैट मान के चलिए कि ऐसा नेचर है. ये सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है? बोथ साइड सेम दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है? सिमेट्रिक है. So we can write down like that. Yes, 0 to infinity. How many times? 2 times. Yes or no? Now this function is even or odd? Even function है, so we can write down how many times? 2 times. Then 2 times बोलिए 0 to infinity x square e to the power minus x square dx. अभी वो कौन से फॉर्म में आ गया? नहीं, वो असिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है. बस हमने क्या लिखा? टू टाइम्स ऑफ दिस वन. ओके, मतलब कौन से फॉर्म में आ गया? मतलब गामा फॉर्म में आ गया. ये सर नो, मतलब यह हम कौन सा इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं? तो वी कैन यूज द गामा इंटीग्रेशन. हियर वी कैन यूज द गामा इंटीग्रेशन. क्यों ऐसे हमने टू टाइम्स लिखा? बिकॉज हमें पता है कि गामा इंटीग्रेशन हमें यूज करना है. तो वी कैन राइट ऑन द लिमिट इज मस्ट बी 0 to infinity x to the power n e to the power minus x to the power n dx is equal to फॉर्मूला हमें वो मेमोराइज करना पड़ेगा. ओके, इसमें फिर दिक्कत क्या होगी? देखिए, सपोज व्हाट इज द इंटीग्रेशन. मान के चलिए कि सपोज स्टार्टिंग हम 0 to infinity ले लेते, कोई दिक्कत नहीं. x square e to the power minus x square dx. how to solve this integration? हाँ, using gamma formula. 1 upon en gamma m plus 1 upon n divided by a to the power m plus 1 upon n. है समझ में? ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मेमोराइज करना है. n मींस पावर ऑफ दिस x, m मींस पावर ऑफ दिस x. या तो दोनों भी पावर सेम है, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आपको प्रॉब्लम कहां आएगा? देखिए, हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m is equal to 2. What is the value of n?
n is equal to limit 0 to infinity x to the power m e to the power minus ax to the power n dx is equal to how much? This one. तो कंपेयर करिए. यस बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pm? pm. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pn? n is equal to 2. गुड. a is equal to माइनस के लिए माइनस कंसीडर कर लिए, x टू द पावर n के लिए x टू द पावर व्हाटएवर द पावर है उसका कंसीडर करिए. मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की जगह हमें क्या आ रहा है? a ही आ रहा है. यस सर, a की जगह a ही आ रहा है. ओके. तो a is equal to how much? a, suppose a is equal to a. Now just to substitute this value in this equation, then this is equal to how much? Then 1 by 2. 1 by 2. Okay. Gamma 3 by 2. Okay. a raised to 3 by 2. a raised to 3 by 2. Okay. फिर इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं. Focus on this one. Okay. What is the value of gamma 3 by 2? Gamma 3 by 2. Suppose gamma 5. Gamma 5. Okay. Gamma 5 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम gamma 5 can be written as, और सिंपल, how to solve this one? कैपिटल N जो भी वैल्यू है उसको कैपिटल N कंसीडर करिए. ओके. कैपिटल N जो है दिस इज स्प्लिटेड इनटू स्मॉल n प्लस 1. स्मॉल n प्लस 1. ओके. फर्स्ट स्टेप, कैपिटल N को कैसे लिखना है हमें? स्मॉल n प्लस 1. मतलब जो भी वैल्यू है इसको ऐसे लिखिए, समथिंग प्लस 1. समथिंग प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल N आना चाहिए. ओके. और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें? n गामा n लिखना है. n गामा n. सपोज मान के चलिए हियर इज अ 5 और हियर इज अ 3. तो 3 को कैसे लिखेंगे हम? n plus 1 is nothing but capital N. Means what is the value of n here now? Small n is equal to 2 plus 1. Next step. n मतलब n is equal to how much? कंपेयर करिए. n is equal to 2 gamma 2. ओके. ये कहां तक जाना हमें? गामा 1 की वैल्यू होती है 1. गामा 1 वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 1. ओके. तो 2 भी अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा. फिर 2 को कन्वर्ट करिए. कैसे करना हमें? n plus 1. Then this is equal to how much? Then 2 gamma 1 plus 1. Next, 1 plus 1 is nothing but 2 को कैसे लिख दिया हमने? कैपिटल N can be written as small n plus 1. ओके. 1 plus something लिखना है, रिमेनिंग पार्ट 2 है, 1 लिखा, समथिंग रिमेनिंग कितना हो रहेगा? 1 रहेगा. 1 plus 1 मतलब दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 2 1 gamma 1. What is the value of gamma 1? Gamma 1 value 1. I mean this is equal to how much? 2 into 1 means 2. Okay. Next, gamma 4. Gamma 4 can be written as n plus 1. N plus 1 means 3 plus 1. Next, n 3 gamma 3. और भी कंप्लीट सॉल्व हो गया कि वो नहीं सॉल्व हुआ है? फिर अगेन राइट डाउन 3 gamma gamma 2 plus 1. Okay. Next, 3 into 2 gamma 1. 3 n plus 1 can be written as 3 gamma 1 plus 1. ये 3 स्टेप याद रखिए प्रॉपर्ली. ओके. कैपिटल N को कैसे लेके हमने? n plus 1. Next, n plus 1 can be written as n gamma n. This is nothing but n plus 1. n is nothing but 2. Means 2 gamma 2. अभी 3 को छोड़ दीजिए, 3 बाहर ही निकल गया. फोकस ऑन 2 plus 1. 2 plus 1 means n plus 1 हो गया. Yes or no? n plus 1 can be written as n gamma n. Means 2 gamma 2. Next, 2 को और सॉल्व करना पड़ेगा हमें.
2 को कैसे लिखेंगे फिर 3 2 1 plus 1 1 plus 1 1 plus 1 it can be written as 3 2 1 gamma 1 gamma 1 gamma 1 1 मतलब 3 into 2 how much 6 अरे समझ में next 5 5 can be written as 4 plus 1 next 4 plus 1 can be written as 4 gamma 4 next 4 gamma 3 plus 1 next 4 into gamma 2 plus 1 डायरेक्ट क्यों जंप मार रहे हैं आप पहले एक स्टेप लिखिए ना 3 plus 3 gamma 3 ओके नेक्स्ट 4 3 gamma 2 plus 1 next 4 into 3 into 2 gamma 2 okay gamma 2 can be written as 1 plus 1 3 2 1 1 gamma 1 plus 1 1 plus 1 okay 3 into 2 6 6 into 4 24 okay yes बोलिए next 6 7 हाँ नहीं वो करना है ना इसलिए इसके पहले ये भी हमें थोड़ा सा सिंपलीफाई होना चाहिए एक बार समझ में आ गया तो ये सिंपल हो जाएगा फिर ओके हाँ बोलिए हाँ बोलिए हाँ सिक्स सेवन टोटल सॉल्व करना पड़ेगा हाँ नहीं नहीं मतलब अभी मत लिखिए गामा 1/2 हाँ कितने ओके हाँ बोलिए 60 हाँ सीआर बोलिए 5 गामा 5 यस सर नेक्स्ट 5 4 gamma 4 next
5 5 into 4 into 3. 4 into 3 gamma 3. Next 5 into 4 into 3 into 5 into 4 into 3 into 2 gamma 1 plus 2. Gamma 2 is nothing but 5. 5. 60. This is equal to 60. Everything. 60 हो गया? Yes. हाँ 60 कैसे हो रहा है? 120 60 कैसे हो? हाँ देखिए 3 into 2 6. So 5 into 4. हाँ 5 into 4 20. 20 into 2 40. 40 into 3 120. मैंने 3 to the 60, 5 to the 40. Next 7. 6 6. Next 6 5 5. Next 6 into 5 into 4 4. 4. Next 6 6 into 5 into 4 into 4 into 3 into 3. Next into 5. 6 into 5 into 4 into 2 into 2. 2 is nothing but 1. ओके अभी ये डायरेक्ट समझ में आ गया. अभी फ्रैक्शन का देखते हैं. हाँ बोलिए 3/2. 3/2 can be written as 3/2 plus 1/2 plus 1. Yes or no? Then this becomes 3/2. Clear? This is equal to how much? 1/2 gamma 1/2 gamma 1/2. गामा 1/2 की वैल्यू यहाँ याद रखना. जैसे हमने लास्ट टाइम क्या याद रखा है 1 is equal to 1. Gamma 1 is equal to 1. Now gamma 1/2 can be written as root pi. Gamma 1/2 can be written as root pi. Okay, ये दो वैल्यू लिखी है. Gamma 1 1 gamma 1/2 root pi. Okay, हाँ देखिए what is the gamma 1/2 value then? Root pi. And this is equal to how much? 1/2 root pi. Next gamma 5/2. Gamma 5/2 can be written as, yes, 3/2 plus 1. 3/2 plus 1 can be written as 3/2 gamma 1/2 plus, sorry, डायरेक्ट जंप मत मारिए. 3/2 gamma 3/2. Next 3/2 1/2 plus 1. Yes or no? 3/2 1/2 plus 1. 3/2 into 1/2 gamma 1/2. Gamma 1/2 root pi. Gamma 1/2 root pi. And this is equal to how much? Root 3 pi upon how much? 4 or 3/4 root pi. Gamma 1/2 value is equal to how much? Root pi. Gamma 1 is equal to 1. Okay. Next 7/2. 7/2 5/2 plus 1. Okay. 5/2 plus 1 can be written as 5/2 gamma 5/2. Next 5/2 gamma 3/2 plus 1. 5/2 3/2 gamma 3/2. Okay. Next gamma 3/2 can be written as 5/2 3/2 1/2 plus 1. Okay. Yes. बोलिए 5/2 into 3/2 into 1/2 gamma 1/2. Gamma 1/2 root pi. And this is equal to 3 into 5 15 by 8 into root pi. Okay. Next gamma 9/2. Gamma 7/2 gamma 7/2 plus 1. Gamma 7/2 plus 1 can be written. Okay, yes. 5/2 plus 1.
Next, 7 by 2 into 5 by 2. 7 by 2 into 5 by 2, gamma 3 by 5. Sorry, 5 by 2. 5 by 2. Next, 7 by 2. 7 by 2, 5 by 2, 3 by 2 plus 1. 3 by 2 plus 1. 7 by 2. 7 by 2, 5 by 2, 3 by 2. gamma 3 by 2. Yes. 7 by 2, 5 by 2, 3 by 2, 1 by 2 plus 1. 1 by 2 plus 1. Okay, 1 by 2 plus 1. 7 by 2. 7 by 2, 5 by 2, 3 by 2, 1 by 2. 1 by 2 gamma. Not root, this is 1 by 2. 1 by 2, root pi. 15. 15 into 7, 105, no? 105 upon 16 into root. Yes, बोलिए any numbers? 11 by 2. First, 9 by 2. Inside, 9 by 2. 9 by 2. Next, 9 by 2, 7 by 2 plus 1. 7 by 2, gamma 7 by 2. Yes or no? Next, 9 by 2 9 by 2, into 7 by 2 7 by 2, into 5 by 2. gamma 5 by 2. Next, 9 by 2, 7 by 2, 5 by 9 by 2, 7 by 2, 5 by 2. 5 by 2, 3 by 2, gamma 3 by 2. Next, 9 by 2, 7 by 2, 5 by 2, 3 by 9 by 2, 7 by 2, 5 by 2, 3 by 2, 1 by 2, root pi. आ रहा है समझ में? गामा इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. क्लियर? नेक्स्ट. नाही लिहून घ्यायला आपल्याला एवढा वेळ नसेल. अभी ये पूरा मिलेगा ना आपको? notes. हाँ, अभी 2 मिनट में सेंड कर देता हूँ आपको बाद में. मतलब ये प्रॉपरली आपको समझाने में अच्छी तरफ से टाइम मिल जाएगा. हाँ, अभी से आपको ये आदत हो गई. अभी मैं लिखने को दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी. यस, हाँ बोलिए. सेकंड, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी. हाँ सॉरी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. हाँ, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. e to the power minus ax square dx formula is equal to how much? Root N plus 1. pi by a. Root pi by a. Okay. Gamma formula 0 to infinity. Yes, x to the power n e to the power minus a x to the power n dx is equal to 1 upon n gamma m plus 1 upon n a to the power m plus 1 upon n. Okay. Next, जब हमारे पावर यहाँ n is equal to 1 हो तो we can use another formula also. Which one? Limit is 0 to infinity r to the power n or x to the power n e to the power minus ax dx. Here power of x is equal to how much? 1. Then this is equal to how much? Formula is n factorial upon a to the power n plus 1. A to the power n plus 1. Simple. But this formula is applicable only when here x is power is 1 and limit is 0 to infinity. Like that. Suppose 0 to infinity r square e to the power minus ar dr. Okay, how to solve this integration? What is the value of Pn? Means here we can use the gamma formula or this formula. This formula. We can use gamma also, no problem. We're getting the same answer. Okay, but this is slightly lengthy part. Power is 1 here, then we can use this formula. Power is 1, we can use this formula. Here x is replaced by r, no problem. Here x is variable, here r is variable. Okay, only focus on en and a. What is the value of en? n is equal to 2. What is the value of a? A is equal to यही लिखा है हमने. Okay, a नोट लिख दे यहाँ, सपोज मान के चलिए. Okay, a is equal to
a naught. Then this is equal to how much? N factorial. N factorial matlab 2 factorial upon A naught a naught and 2 plus 1. n plus 1 matlab 2 plus 1 means 3. Okay, limit 0 to infinity r to the power 3 e to the power minus r upon a naught dr. What is the value of n? N is equal to 3 n is equal to 3. A is equal to minus r a is equal to minus r upon a naught n. in this case which one is variable? R is a variable. Yes or no? मतलब x is replaced by r, तो x के लिए x जाएगा, माइनस के लिए माइनस जाएगा, तो a की पोजीशन किसने ले ली है? r a की जगह पे क्या आ रहा है? r ये माइनस के लिए तो ये माइनस गया, yes x के लिए r गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a naught. Sir, ये तो upon यहाँ भी a नॉट है, यहाँ भी a नॉट कैसे आएगा? 1 upon a naught is not only a naught, is 1 upon a naught. Okay, and this is equal to how much then? 3 factorial upon 1 upon a naught bracket is to 4 bracket is to 4. Okay, this is possible only when power is 1. Okay, आप ये फॉर्मूले भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. हा गामा फॉर्म्युला, हा बी गॅमा फॉर्म्युलाचा टाइप आहे, पण याला प्रॉपरली गॅमा म्हणायचं. ओके, याला म्हणायचं 0 टू इन्फिनिटी फॉर्म्युला. कोणत्या फॉर्म्युला? याला म्हणायचं 0 टू इन्फिनिटी फॉर्म्युला. दिस इज गामा फॉर्म्युला. आणि याला काय म्हणायचं? मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. डायरेक्ट असं असेल तर फक्त हे जो आहे तो ॲज इट इज इथं ठेवून द्यायचा, लाईक दॅट. सपोज मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e to the power minus 2x square dx. What is this integration value? Root pi by a na. Okay, root pi by a is equal to how much? Root pi upon a is nothing but 2. This is the final answer. Okay, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं. Okay, now suppose r to the power n e to the power minus a r dr. What is this integration value? pi by root pi by नहीं, रूट पाई बाई एन कब? जब हमारे पास लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो तो फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग हियर पावर इज 2, yes then we can use this formula. 0 Here limit is 0 to infinity, means we can use 1 upon n. two formulas. Which two formulas? Gamma formula or 0 to infinity formula? Which one is simplest one for this case? Here power is 1, means we can use 0 to infinity formula. Yes or no? Power is more than 1, we can use the gamma formula. बाकी तो everything will be same. तो बोलिए, what is the value of n? n factorial N is equal to any n is equal to 2 का दिया any दिया r to the power n r to the power e to the power minus ar dr. n की वैल्यू n what is the value of n? जो भी x p की पावर रहेगी इसे n कंसीडर करिए, 0 जो भी x की पावर रहेगी उसको n कंसीडर करिए. x की x कौन से क्वांटिटी से रिप्लेस हो रहा है? r. तो r की पावर इज नथिंग बट n, तो n is nothing but n here and a is nothing but a. Then formula n factorial upon a to the power n plus 1. अरे समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट. सपोज आपके पास कोई लिमिट्स हैं 0 टू l वगैरह कुछ जो भी है, 0 टू l sin स्क्वायर n pi x upon a into dx. What is this integration values? सिंपल मान के चलिए आपके पास 0 टू a और l है और यहाँ है sin n pi x upon a into dx. What is this integration values? Sin derivative
Plus cos. Cos derivative. Minus sin. Yes or no? Sin integration. Minus cos. Cos integration. Plus sin. Okay. Sin x derivative. Sin x derivative. A cos x. Cos x derivative. Minus a sin x. Sin x integration. Huh? A sin. Sorry, sin x upon a. Minus Minus sin x cos ax upon a. a, or cos ax upon minus a. Yes. Yes or no? Next, cos ax integration. Sin ax upon a. Okay. Sin 10x. Sin 10x dx. Cos 10x. Sin 10x. हाँ. Cos x. Minus cos Cos x. 10x upon minus 10 or plus 10 below म्हणल्यानंतर. Okay. Minus cos 10x upon 10. लक्षात आलं? हाँ. Sin 2 by a x. Integration. Minus cos. Minus cos 2 upon a x upon 2 by a. और कैसे लिख सकते हैं हम? A cos 2. A by 2 also. Okay. Sin n pi x upon a. Integration. Minus A cos. a Cos. upon N pi x upon a upon n pi x. n pi upon a आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a upon N pi. n pi. अरे समझ में? Okay. So what is the integration of sin n pi x upon a into dx? Minus A. cos n pi x upon a n pi upon a, और इसको ही कैसे लिख सकते हैं हम? This can be written as minus a upon n pi into cos n pi x upon. अरे समझ में? पूरा पार्ट्स देखिए. Okay, come to the point now. What is the value of psi? Box system के लिए psi value is equal to root 2 upon a sin n pi x upon a. This is the wave function for this particle. जो particle इस box में move कर रहा है. Okay, this particle strike on this wall, again come to in this side. Okay. Now our aim to finding the probability. What is the probability formula? Probability formula is equal to P is equal to integration, whatever the integrations, psi star psi dx depends upon the system. मतलब आपको कहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है? मान के चले मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो लिमिट क्या आएगा? 0 to a by 3. मुझे यहाँ तक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, लिमिट इज 0 to a by 2. यस और नो? नेक्स्ट, मुझे प्रोबेबिलिटी यहाँ तक फाइंड आउट करना है, 0 to a by 3a by 4. यस और नो? इज लाइक दैट. मतलब लिमिट इज डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम. Psi into psi star. Okay. Suppose function is real. Function is real. Then psi and psi star both are same. Psi and psi star are same. Psi star is a complex conjugate. Complex conjugate means I is replaced by minus I. मतलब suppose मान के चलिए कि psi is equal to how much? A e to the power I k x है. So what is the value of psi star? Psi star is equal to A e to the power I is replaced by क्या करना है हमें? माइनस करना है, तो माइनस आई के एक्स. ओके. हाँ, सपोज मान के चलिए कि साई इज अ प्लस.
psi is equal to a e to the power I k x minus I k x, तो psi star क्या होगा? psi star a e to the power I is replaced by minus I, मग minus I is replaced by I. प्लस I, माइनस को प्लस करिए, प्लस को माइनस करिए. Okay, this is the value of psi star. Function is imaginary. Yeah? I is present, then we can say this is the imaginary. Function is real. Real मतलब no imaginary part is there. मतलब simple, psi is equal to a e to the power kx. a e to the power kx. या कहीं भी I दिख रहा है? नहीं है. Then what is the value of psi star? Psi star is equal to a star a to the power kx. फिर also star लिखिए. हाँ. This may be same. Suppose मान के चलो कि a also real, then a and a star both are same. दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं है. मतलब रियल फंक्शन इज रियल, देन psi and psi star both are same. Psi and psi star are same. Okay. Then mod psi square is nothing but psi star into psi. Psi star into psi square. Like that, mod z square can be written as z into z star. Okay, z is a complex function. Okay, z is equal to how much? जब हम मैथमेटिक्स में जाए, z is equal to x plus iy होता है. Okay, what is the mod z square? Mod z square can be written as z into z star. मतलब मान के चलिए कि z is equal to how much? x plus iy. x plus iy. तो what is the mod z square then? Mod z square is equal to, बोलिए, z means जो भी है, z means x plus iy, and z star means star means complex conjugate. Complex conjugate, I is replaced by minus I. मतलब this can be written x minus iy. This is the value of mod z square. Clear? Now, हा probability formula psi star psi dx. Okay. आता यामध्ये दोन टाइप्स होतात. दोन टाइप्स म्हणजे काय? सपोज गिवन फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज किंवा वेल बिहेव्ड नाहीये, तर त्या केसमध्ये काय? तर नॉर्मलायझेशन कंडिशन. व्हॉट इज द नॉर्मलायझेशन कंडिशन? psi star psi dx is equal to 1. जर असं येत असेल तर गिवन फंक्शन इज नॉर्मलाइज. ओके. आणि जर आपल्या प्रॉपर्टी मध्ये फंक्शन जर नॉर्मलाइज नसेल, सपोज हेच आता घेतलेले जे फंक्शन आहे, सपोज psi is equal to how much? sin n pi x upon a. आता इथं जर a असता तर दिस इज नॉट अ वेल बिहेव्ड और नॉर्मलाइज वेव फंक्शन. ओके. आता या केससाठी जर आपण कंडिशन यूज केली की psi star psi dx is equal to 1, तर या केसमध्ये a ची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे आपल्याला? √2/a. दिस √2 इज नोन एज अ नॉर्मलायझेशन कॉन्स्टंट. म्हणजे फंक्शन जे आहे काय करत आहे? नॉर्मलाइज करत आहे. ओके. मीन्स psi इज इक्वल टू हाऊ मच? √2 अपॉन a sin n pi x अपॉन a. हे झालं नॉर्मलाइज वेव फंक्शन. ओके. आणि इथे e असल्यामुळे दिस विल बी नॉट अ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन. मग व्हॉट इज द नॉर्मलायझेशन कंडिशन? नॉर्मलायझेशन कंडिशन इज psi star psi dx is equal to how much? 1. जर फंक्शन आपलं नॉर्मलाइज नसेल तर वी कॅन यूज दिस कंडिशन. सेकंड वन, सपोज आपली प्रॉपर्टी जी आहे ही नॉर्मलाइज, सॉरी, फंक्शन नॉर्मलाइज नाहीये, तर तुम्ही सेपरेट नॉर्मलाइज करू शकता. फर्स्ट वन. सेकंड थिंग्स, राइट डाउन दिस फॉर्म्युला, इंटिग्रेशन psi star psi dx upon integration psi star psi dx. Then we getting how much? This is equal to how much? 1. हाँ, p is equal to how much then? 1. तो हर बार आपकी प्रॉपर्टी कितनी आएगी? जब हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं तो हर बार प्रॉपर्टी कितनी आएगी? ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्या? हर बार आपका लिमिट तो चेंज हो जाएगा. हर बार थोड़ी है कि दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आप प्रॉपर्टी फाइंड आउट करें, कभी हाफ में भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसा ना, इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है. ऐसा ना. व्हाट इज द स्मॉल चेंज देन? लिमिट हियर इज x1 टू x2, x1 टू x2. जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो वी कैन टेक द ऑल पेस लिमिट. ऑल पेस लिमिट, ऑल पेस लिमिट. ऑल पेस लिमिट मींस क्या है कि देखिए, मान के चलिए कि वी कैन फाइंड आउट द प्रॉपर्टी फॉर 0 to infinity region and wave function psi is equal to, they are given something. Psi wave function is equal to how much? Psi is equal to something. What is the limit for this case? minus infinity is less than x is less than plus infinity. मतलब हमारा फंक्शन जो है minus infinity to plus infinity,
मूव कर रहा है, ओके, और बिहेव है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन 0 टू इंफिनिटी रीजन, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी व्हिच रीजन, 0 टू प्लस इंफिनिटी। Then probability is equal to how much? Suppose given function is not normalized, then numerator limit 0 to infinity कहाँ फाइंड आउट करना है हमें, 0 to infinity में फाइंड आउट करना है, psi star psi dx अपॉन, जब नॉर्मलाइज करते तो वी कैन टेक द ऑल लिमिट्स, ऑल लिमिट इज फंक्शन लिमिट, व्हाट इज द फंक्शन लिमिट, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, psi star psi dx, दिस इज इक्वल टू 1, this is equal to 1 आएगा, no, function will be same but here limit is different, yes or no? और सिंपल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे तो कैसे आ सकता है, मान के चलिए इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसको कैसे लिखेंगे हम, सपोज मान के चलिए कि गिवन फंक्शन इज अ सिमेट्रिक वेव फंक्शन, तो इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब 0 टू इंफिनिटी साई स्टार, लेकिन वो हर बार नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय, इसको 2 टाइम्स लिखिए 0 टू इंफिनिटी साई स्टार साई डीएक्स, अभी ये दोनों भी सेम आ जाएंगे, yes or no? And this get cancel, we getting how much, 2 और 1 by 2, 1 by 2, मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास फंक्शन कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में हमारा वेव फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल इज प्रेजेंट इन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन 0 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में कितना है, 1 है, तो 0 टू इंफिनिटी में कितना होगा, आप टोटल इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसका 0 टू इंफिनिटी कितना हो गया, हाफ हो गया, ऐसा ना, इसका मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी रहेगी, इक्वल टू गेटिंग हाफ, अरे समझ में। नेक्स्ट, जब हम नॉर्मलाइज करते तो लिमिट, लिमिट ऑल पेस, प्रोबेबिलिटी जहां हमें फाइंड आउट करना है वहां, सिंपल, देखिए सपोज मान के चलिए फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर, अभी जो हमने सिस्टम लिया था, प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू, सपोज सिस्टम इज अ बॉक्स, व्हाट इज द लिमिट, 0 टू l, दिस इज अ टोटल लिमिट, हमें कहां प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, 0 टू l में फाइंड आउट, 0 टू l/2 में फाइंड आउट करना है, देन प्रोबेबिलिटी 0 टू l/2, okay, this is equal to how much, then integration 0 to l/2 psi star psi dx upon, now given function is not normalized, means we cannot write down the root 2 upon a sin n pi x upon a, here we can write down the a into sin n pi x upon a into dx, आ रहा है समझ में, हाँ, लोअर लिमिट मतलब बिलो लिमिट इज ऑल पेस लिमिट, मतलब सिस्टम का लिमिट, व्हाट इज द सिस्टम लिमिट, सिस्टम कहां से कहां तक है, 0 टू l है, यस और नो, मतलब हियर लिमिट इज 0 टू l psi star psi dx, ओके, आपको कहां प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, 0 टू l/2 में फाइंड आउट करना है, दिस इज ऑल पेस लिमिट, सपोज गिवन फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, गिवन फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, देन दिस पार्ट बिकम 1, मतलब हमने ऐसे फंक्शन ले लिया, psi इज इक्वल टू a sin n pi x upon a, l, this is not a normalized wave function, at that time we need to write down this part also, but suppose psi is equal to how much, psi is equal to root 2 upon a sin n pi x upon a, अभी ये जो फंक्शन ये नॉर्मलाइज है ऑलरेडी, ओके, नॉर्मलाइज है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फार्मूला, प्रोबेबिलिटी फार्मूला इज इक्वल टू इंटीग्रेशन psi star psi dx, जब हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा हमें कि हाउ टू गेटिंग द रूट 2 बाय a, हाँ, क्योंकि वहाँ 1/2 कॉमन निकाले और फिर वरती प्रोबेबिलिटी असिमेट्रिक असेल तर, हा नाही, हे जर आपण ऑलवेज हे जास्त आहे, टोटल सिस्टमचं असतं लिमिट, म्हणजे सिस्टम कोणती, आपण सपोज मग अशी मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी घेतली, तर त्या केसमध्ये लिमिट मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आणि वरचं जे लिमिट असतं तिथं सपोज आपण काय कन्सिडर केलं की वी कॅन फाइंड आउट द लिमिट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, म्हणून इथं 0 टू इन्फिनिटी घेतला लास्ट केसमध्ये, जर तिथं म्हटले असते 0 टू 100 मीटर, तर मग 0 टू 100 न्यूमरेटरला आलं असतं, आणि न्यूमरेटर डिनोमिनेटरला मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आता आपली सिस्टम चेंज झाली, आता ही सिस्टमचं लिमिट मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नाहीये, आता लिमिट काय माझ्याकडे 0 टू इन्फिनिटी, म्हणजे फक्त वेव्ह फंक्शन कुठे प्रेझेंट असणार आहे, 0 टू l मध्येच प्रेझेंट असणार आहे, ओके, हे झालं टोटल सिस्टमचं लिमिट,
पण या टोटल सिस्टम मध्ये आपण प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करतोय का? नाही. तर कुठं फाइंड आउट करतोय? फक्त 0 to L/2 मध्ये. म्हणून आपण प्रोबॅबिलिटी काय केलं? 0 to L/2, 0 to L/2 psi star psi dx. बरोबर आहे. हा जनरल फॉर्म्युला आहे. पण ते कधी जर आपलं फंक्शन नॉर्मलाइज असेल तर. जर आपलं फंक्शन नॉर्मलाइज नसेल तर ते नॉर्मलाइज करून घ्यावं लागतं आपल्याला. मग आपल्याकडे दोन मेथड आहेत. आधीच नॉर्मलाइज करून घ्या किंवा डायरेक्ट एकदाच दोन्ही पण सॉल्व्ह करा. लक्षात आलं? मग नॉर्मलायझेशन साठी कंडिशन काय? लिमिट 0 टू टोटल सिस्टम लिमिट. आणि प्रोबॅबिलिटी साठी जिथं काय फाइंड आउट करतायत ते लिमिट घ्यायचं. सपोज आपल्याला इथं 3L/4 घ्यायचं असेल तर 0 टू 3L/4. लक्षात येत आहे? हा. मग जर तुमचं फंक्शन आता रूट मी सांगितलं तर इथं माझ्याकडे फंक्शन नॉर्मलाइज नाहीये तर वी कॅन यूज दिस फॉर्म्युला. जर फंक्शन वेल बिहेव्ड अँड वेल नॉर्मलाइज आहे, व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी फॉर्म्युला? सिंपल साई स्टार साई dx. ओके, म्हणजे त्या केसमध्ये ही व्हॅल्यू किती आली आहे? 1 आली आहे. जर फंक्शन आपलं नॉर्मलाइज असेल तर साई स्टार साई dx व्हॅल्यू किती असते? 1 असते. मग जर दिस डिवायडेड बाय 1 इज नथिंग बट दिस 1. ओके. जर फंक्शन नॉर्मलाइज नसेल तर पहिल्यांदा नॉर्मलाइज करून घ्या बाय युजिंग दिस मेथड. फिर अगर वो नीचे रहती है वो वाली ऊपर रहती यस. नहीं नहीं, ऊपर होगी नहीं. है होंगी आप मुझे बोले कि ये बोर्ड है, हाँ ठीक है, ये बोर्ड हमें प्रोबेबिलिटी कहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगी? ओनली सपोज 0 to L में फाइंड आउट करनी पड़ेगी. यस और नो? तब ये इसे ऊपर कैसे लिखेंगे? यहाँ ऊपर और इसको नीचे नहीं लिख सकते. ये कोई दूसरी क्वेश्चन हाँ, दूसरी इक्वेशन है तो नीचे वाला डेफिनेटली ज्यादा ही रहेगा. उसका आंसर 1 ही आया. हाँ, उसका आंसर 1 ही आएगा. कब? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम लिमिट हो. सिंपल सी बात है. ये रूम मान के चलिए कि आपको प्रोबेबिलिटी इस रीजन में फाइंड आउट करना है. ये हो गया टोटल रीजन. यस और नो? आप कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे और जहां फाइंड आउट करना है उसको नीचे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि उसको नॉर्मलाइज करना है हमें. ओके, हमारे पास ये फंक्शन नॉर्मलाइज है तो नो नीड टू राइट डाउन दिस वन. जो पीछे की इक्वेशन थी उसका आंसर 1/2 आया. हाँ, इसका 1/2 क्यों आया था? ये जो है ना, इसका आंसर क्यों आया? देखिए, सपोज मान के चलिए कि मेरे पास फंक्शन है साई इज इक्वल टू √2 अपॉन ए साइन n पाई x अपॉन a इंटू डी. सॉरी, ओके. और ये जो टोटल सिस्टम का लिमिट है मेरे पास 0 इज x इज लेस देन L, मतलब वेव फंक्शन वेरिंग फ्रॉम 0 टू L. ओके, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, और हमें प्रोबेबिलिटी का फाइंड आउट करना है 0 टू L में, L/2 में, 0 टू L/2. ओके, नाउ then we can write down here limit is 0 to L/2. This is finding limit. Function psi star psi √2 upon a sin n pi x upon a into √2 upon a sin n pi x upon a into dx. ओके, ये हो गया हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का रीजन. सेकंड वन, गिवन फंक्शन मान के चलो कि नॉर्मलाइज नहीं, ये तो नॉर्मलाइज है, अभी कोई दिक्कत नहीं है. लिमिट 0 टू टोटल सिस्टम लिमिट. टोटल सिस्टम का लिमिट क्या है? 0 टू L √2 अपॉन ए साइन n पाई x अपॉन a इंटू √2 अपॉन ए साइन n पाई x अपॉन a इंटू dx. टोटल सिस्टम कितना है? 0 टू L है. हमें कौन से रीजन में फाइंड आउट करना है? 0 टू L/2 में. अभी यहाँ जो है ये डायरेक्ट लिखने से फायदा क्या होता है कि सपोज मान के चलो कि हमारे पास सिस्टम जो है तो नॉर्मलाइज नहीं है प्रॉपरली, तो इसे क्या कंसीडर करेंगे हम? जनरल कांस्टेंट ए कंसीडर करेंगे. ओके, जनरल कांस्टेंट ए कंसीडर करेंगे. दिस बिकम ए स्टार हो जाएगा. दिस इज ए, दिस इज ए स्टार, दिस इज ए इंटू dx. ओके, और ये स्टार, दिस बिकम mod a square. Yes or no? तो here getting mod a square. लिमिट 0 टू L/2, और ये फंक्शन बनेगा साइन इंटू साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a इंटू dx, और डिनोमिनेटर mod a स्क्वायर. एट द सेम टाइम हमें सॉल्व करने का फायदा क्या है? देखिए, तो यहां जो है साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a इंटू dx. ओके, ये लेना है हमें. तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है दिस गेटिंग कैंसिल हो जाएगा. ये सपोर्ट होता है. ओके, आज सपोज मान के चलो कि हमारे पास क्या है कि हमें अलग ये सॉल्व करना है, तो अलग ये सॉल्व करना है तो हम क्या करना पड़ेगा फिर? वी कैन यूज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मेथड. dx इज इक्वल टू हाउ मच? 1.
सपोज मान के चलिए कि 0 to l, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें पता नहीं है, वी कैन टेक a into a, दिस बिकम mod a square लिमिट 0 to l sin square n pi x upon a into dx. ये मेथड यूज करिए, वी गेटिंग द a वैल्यू। सपोज मान के चलिए कि a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, और √2/a हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली। तो अभी ये डिनोमिनेटर पार्ट है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। यही सॉल्व करने की जरूरत है जब हमारे पास फंक्शन वेल बिहेव्ड है, वेल नॉर्मलाइज्ड है। ओके, और ये हमें वन टाइम लिखने से फायदा क्या है, समझ में आ रहा है आपको, कि दिस पार्ट विल बी सेम। ओके, और सेकंड बात, इस ये जो है जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हम। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? बिकॉज लास्ट टाइम न्यूमरेटर में लिमिट था 0 to इंफिनिटी, यहां भी हमने 0 to इंफिनिटी कन्वर्ट किया था, इसलिए दिस गेट कैंसिल हो गया। अभी तो हमारे पास यह लिमिट क्या है, 0 to l/2, यह लिमिट क्या है, 0 to l है, तो इसकी वैल्यू जो है वो अलग आएगी, इसलिए डोंट कैंसिल दिस एज दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ, ये कैंसिल नहीं हो सकता, हम इसको कैंसिल करेंगे, ये तो सेम दिख रहा है लेकिन यह लिमिट अलग है। ओके, तो ये कैंसिल नहीं होगा। जब हमारे पास लिमिट 0 to इंफिनिटी फॉर्म है या सेम लिमिट है, तो वी कैन कैंसिल टू दिस वन। जैसे कि हम 2 टाइम्स कर सकते, इसको नहीं 2 टाइम्स कर सकते हम, बिकॉज साइन इज नॉट अ इवन फंक्शन, साइन इज ऑड फंक्शन। यस, क्या डाउट था और इसमें आपको? हाँ, ये क्यों लिखा है हमने, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। आपको अलग नॉर्मलाइज करना है तो अलग भी नॉर्मलाइज करके फाइंड आउट कर देंगे, तो भी आपको बस ये लिखना है, नो नीड टू राइट डाउन दिस पार्ट, डायरेक्टली वी कैन सॉल्व दिस वन, वी गेटिंग द प्रोबेबिलिटी। Probability, given function is normalized, given function is normalized, given function is normalized, given function is normalized, तो probability formula p is equal to integration psi star psi dx. Given function is not normalized, given function is not normalized, given function is not normalized, then what is the probability formula? P is equal to, yes बोलिए, integration psi star psi dx upon integration psi star psi dx. What is the small change here? Here is a all pace limit, all pace limit, और यहाँ x1 to x2 लिखिए, दिस इज जनरल लिमिट, मतलब कहां से कहां फाइंड आउट करना है। मान के चलिए कि हमने LHO सिस्टम लिया, LHO सिस्टम लिमिट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट बॉक्स सिस्टम लिया तो लिमिट क्या बनेगा, 0 to l और 0 to a। नेक्स्ट सपोज हाइड्रोजन सिस्टम ले लिया, तो हाइड्रोजन मिनिमम लिमिट कौन सा होगा, हियर इज अ सेंटर, मतलब हियर इज अ 0, इसकी साइज मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन जो है तो अप टू इंफिनिटी जा सकता है, मतलब हियर लिमिट इज 0 to इंफिनिटी, मतलब डिनोमिनेटर वाला लिमिट क्या रहेगा, 0 to इंफिनिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, 0 to इंफिनिटी, लेकिन उन्होंने बोला कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी सपोज 0 to a, तो न्यूमरेटर लिमिट 0 to a, कहां फाइंड आउट करना है, 0 to a में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां प्रेजेंट होने का चांस है, टोटल 0 to इंफिनिटी, आउट ऑफ कहां फाइंड आउट करना है, 0 to a। ओके, मतलब हियर इज ऑल पेस लिमिट। सिंपल मान के चलिए कि आपका जो टोटल लिमिट्स है वो कितना होगा, अभी टोटल लिमिट्स मतलब अभी जो आपका लिमिट जो है, सेंटर मॉडर्न लोअर लिमिट, हायर लिमिट मान के चलिए कि टोटल पुणे बाउंड्री, खेर आळंदी देहू सपोज इकडे खडकवासला वाघोली। ओके, दिस इज द हायेस्ट लिमिट, बरोबर, हे लोअर लिमिट झालं, हे हायर लिमिट झालं टोटल सिस्टम साठी, बट ऍक्च्युअल तुम्ही आता कुठे प्रेझेंट आहे, सपोज मॉडर्न टू क्लास, म्हणजे तुमची प्रोबेबिलिटी कुठे फाइंड आउट करायची आपल्याला, मॉडर्न कॉलेज टू क्लास और डेक्कन, लक्षात आलं, म्हणजे न्यूमरेटर लिमिट काय असणार आहे आपल्याकडे, सपोज मॉडर्न टू क्लास, आणि आपलं डिनोमिनेटरचं लिमिट काय असेल, मॉडर्न टू टोटल पुणे बाउंड्री, जी काय एक्स्ट्रीम बाउंड्री आहे ती, लक्षात आलं। हा, नेक्स्ट
आता वेल बिहेव्ड आहे म्हणजे तुमच्या लँग्वेज मध्ये काय की तुमचं टार्गेटच नाहीये की आता फक्त तुमचं टार्गेट आहे क्लास 2 कॉलेज जायचं आहे तर खालचा पार्ट लिहिण्याची गरज नाही म्हणजे तुम्ही वेल नॉर्मलाइज आहात की तुम्हाला फक्त कॉलेज टू क्लास करायचं क्लास टू कॉलेज जायचं आहे त्यावेळेस हा पार्ट लिहिण्याची गरज नाहीये म्हणजे सिंपल त्या केसमध्ये ते नॉर्मलाइज झालं प्रॉपरली देन वी कॅन राईट ऑन द x1 टू x2 सिंपल. आता बघा तुम्हाला काही सिस्टम आहेत त्या तुम्हाला प्रॉपरली माहितच असणार आहेत की सपोज माझ्याकडे सिस्टम काय बॉक्स सिस्टम आहे तर √2 ए हे झालं नॉर्मलायझेशन कॉन्स्टंट. सपोज आपण हायड्रोजन पाहिलं तर हायड्रोजन साठी असतं 1/√πa0³ ओके. हा त्यानंतर जर सपोज आपण LHO सिस्टम घेतली तर साईज इक्वल टू α/2n n⁴ ब्रॅकेट इज टू 1/2 हाइड्रोजन एटम नहीं सिंपल सिंगल हाइड्रोजन एटम ठीक है. तो सिंगल हाइड्रोजन एटम में क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस यस और नो ये मूव कर रहा है तो इसका वेव फंक्शन आएगा कुछ ना कुछ हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका वेव फंक्शन पहले इक्वेशन में हमारा जो एटम मतलब मान के चलिए कि कोई सिस्टम है ये एक सिस्टम है इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यस और नो दो एटम के बीच में जो है तो कुछ तो थोड़ा सा गैप रहता है यस और नो ये जो गैप है इस गैप को हम बोलते हैं बॉक्स. एक्चुअली वो ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं रहता एक्चुअली दिस इज लाइक दैट थोड़ा सा ऐसा रहता है बट अप्रोक्सीमेशन लेके इसको हम ऐसे बोलते हैं. अरे समझ में मतलब इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर तो इलेक्ट्रॉन यहां से बिहेव करेगा हियर टू हियर ओके. और जब हमारे पास √π/a e⁻⁻r/a ये जो फंक्शन है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन विच सेल फर्स्ट 1s सेल में हो गया ओके. नेक्स्ट सपोज मान के चलो कि सिस्टम दिस इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 2s सेल तो ये फंक्शन चेंज होगा इन 3s सेल फंक्शन विल बी चेंज ओके. मतलब एक जनरल फॉर्म है कौन से हाइड्रोजन एटम के लिए. सिमिलरली इसमें भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स रहेंगे मान के चलिए कि दिस इज वन एटम इलेक्ट्रॉन इनके बीच में है तो हियर इज वी गेटिंग द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. तो साइज इक्वल टू हाउ मच √2/a sin n⁴x/a ओके. ये n क्या रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करेगा. सपोज ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है यहां है तो n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट एक्साइटेड n इज इक्वल टू एंड so on. Next. Similarly, LHO system, linear harmonic oscillator, मतलब जब हमारा एटम ऑसिलेट करेगा तो वी गेटिंग सम वेव फंक्शन ओके. वेव फंक्शन है दिस इज इक्वल टू दिस वन और इसमें भी आएगा e⁻⁻α²x² into hn of α(x). ये जो n है वो रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. दिस फंक्शन आल्सो चेंज n इज इक्वल टू 0 मतलब ये 0 α(x) इज इक्वल टू 1 होता है 1 α(x) इज इक्वल टू 2 α(x) होता है मतलब एनर्जी लेवल आल्सो चेंज वेव फंक्शन चेंज एनर्जी लेवल आल्सो चेंज ईच एनर्जी लेवल्स गिव द डिफरेंट वेव फंक्शन. सपोज दिस इज द वन एनर्जी लेवल्स ground state first excited what is the wave function suppose system is a box then wave function psi1 of x is equal to √2/a sin πx/a ये हो गया ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन. व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन √2/a sin 2πx/a मतलब this wave function gives the different energy this wave function gives the different energy clear. and some are degenerate wave function. degenerate wave function का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि सिस्टम इज 2D है तो क्या है sin x, y nx ny एट दैट टाइम क्या होता है तो वेव फंक्शन विल बी डिफरेंट बट एनर्जी लेवल्स आर सेम. मतलब सपोज दिस इज √2/a sin n⁴x/a और हियर राइट ऑन द nx there is a √2/a sin ny⁴y/a. ये हो गया 2D का एग्जांपल्स. अब देखिए ये वेव फंक्शन सेकंड क्या वेव फंक्शन हो जाएगा nyx nx तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज √2/a sin ny⁴x/a into √2/a sin nx⁴x/a. इसका मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कि दिस इज द सेंटर ऑफ द एटम ओके और इलेक्ट्रॉन जो है तो रैंडम डायरेक्शन से मूव करेगा. सपोज electron is moving along the directions we're getting one wave function which wave function nx ny. Next suppose electron moving along the directions
देन वी गेटिंग द वेव फंक्शन इज ny. दोनों का रेडियस सेम है. सपोज बैंगल है, इस डायरेक्शन से आप रोटेट कर रहे वन टाइम, सेकंड बैंगल इस डायरेक्शन से रोटेट कर रहे, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है. यहाँ इसका जो रेडियस है दिस विल बी सेम, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब इसका एनर्जी भी सेम आएगा. अरे समझ में, मतलब वी कैन से दिस इज अ डिजेनरेट वेव फंक्शन. डिजेनरेट मतलब क्या है कि बोथ वेव फंक्शन आर डिफरेंट वन, both wave function are different one, but we give the energy will be same. Suppose मान के चलिए कि here we getting the nx is equal to 1, ny is equal to, यहाँ आएगा ny is equal to nx is equal to, what is the energy formula? Energy formula is equal to nx square plus ny square bracket complete 5 square h cross square upon 2ma square. अब nx और ny की वैल्यू पुट करिए, ये वेव फंक्शन और ये वेव फंक्शन के लिए we getting same energy or different energy? Same energy, different energy? Same, because 1 square plus 2 square is 5. सेकंड केस में nx की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 square plus 1 square 5. मतलब दो वेव फंक्शन गिव्स द सेम एनर्जी, देन वी कैन से दीज आर डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग फॉर्म है, बस उसका रोटेशन जो है वो अलग है. वन इज रोटेटिंग लाइक दैट, अनदर वन इज रोटेटिंग इज लाइक दैट, ओनली डायरेक्शन विल बी चेंज, वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा. यस और नो, सिंपल. इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो मान के चलो कि दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो दिस इज एक्स वाई प्लेन. ओके, सेम रेडियस का पार्टिकल इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो ये फंक्शन, ये प्लेन कौन सा बन जाएगा? वाई जेड प्लेन बनेगा. यस और नो, बट एनर्जी विल बी सेम, देन वी कैन से दिस इज अ डिजेनरेट केस. सिस्टम समझ में आ रहा है? और हर एक का कुछ ना कुछ तो लिमिट रहेगा. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है हमें. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो पार्टिकल कौन से रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इस रीजन में इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब पार्टिकल यहाँ जो है कंफर्मेशन हमको मिलेगा कि पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है नहीं है, कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ प्रेजेंट है. अरे समझ में, सिंपल. जब हम ये सिस्टम लेंगे कि बॉक्स 0 to a, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर? हियर वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0. Here wave function is equal to 0, then what is the probability? Psi is equal to 0, then probability 0. Yes or no? What is the psi here? Here also psi is equal to 0, then probability is equal to 0. Psi is not equal to 0. Not equal to 0 इसका मतलब क्या है कि यहाँ पार्टिकल हमारा प्रेजेंट है, पार्टिकल एब्सेंट है तो इसका मतलब psi is equal to 0. Yes or no? साई क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकल है या नहीं रिप्रेजेंट करता है, या नेचर रिप्रेजेंट करता है, क्या नेचर है उस पार्टिकल का. यस और नो? ये साई गिव्स द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट यू. जैसे कि मान के चलो कि आपके पास सीवी है, सीवी मिल गया तो वी गेटिंग फाइंडिंग द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट यू. सीवी, आप कोई कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो सीवी देना पडता है. यस और नो? एकदा सीवी दिला की तुमची सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळू शकते. तसं हे जे वेव्ह फंक्शन असतं हे त्या पार्टिकलचं काय काम करतं? सीवीचं काम करतं. म्हणजे जर एकदा तुमच्याकडे जर वेव्ह फंक्शन आलं तर तुमची त्याची एनर्जी फाइंड आउट करायचं, सगळ्या बाकीच्या जे क्वांटिटीज आहेत ह्या काय करू शकतो आपण? फाइंड आउट करू शकतो. ओके, त्यामध्ये डिफरंट अप्रॉक्सिमेशन्स आहेत. त्यामध्ये स्कॉडिजर इक्वेशन हे अप्रॉक्सिमेशन आहे, एकदम एक्झॅक्ट आन्सर देतं. बाकीचे सगळे अप्रॉक्सिमेशन हे अप्रॉक्सिमेशनच आहेत. लक्षात येत आहे? स्कॉडिजर इक्वेशन हे सुद्धा एक अप्रॉक्सिमेशन आहे, पण ते करेक्ट व्हॅल्यू देतं. लक्षात आलं? बॉर्न अप्रॉक्सिमेशन, डिफरंट टाइप ऑफ अप्रॉक्सिमेशन आहेत, म्हणून सगळ्यात जास्त आपण कोणते यूज करतो? स्कॉडिंजर इक्वेशन्स. लक्षात आलं? व्हॉट इज द स्कॉडिंजर इक्वेशन? HSI is equal to E psi. HSI is equal to E psi. H means Hamiltonian, A means energy. Hamiltonian H is equal to kinetic energy plus potential energy. Yes or no? H plus T. और एक लैग्रेंजियन होता है, लैग्रेंजियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. ओके, ना सी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. हमने सिस्टम कौन सा चूज किया है? बोलिए. सिस्टम इज बॉक्स 0 to A, 0 to L, 0 to L. ओके, पॉप करा देना. 0 to L. What is the wave function? Wave function. वेव्ह फंक्शन हे पाठच करायचे थोड्या दिवसांनी. रूट 2 upon A साइन
n pi x upon a or l, जे काही इथं घेतोय ते a घेतला तर a घ्यायचं, l घेतला तर l घ्यायचं. ओके, दिस इज द जनरल वेव्ह फंक्शन. कुठून कुठपर्यंत? वेअर टू वेअर? 0 is less than x is less than l region. Okay, here this psi value is equal to 0, here psi is equal to 0, here potential is equal to infinity, 0 infinity. Okay, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कौन से रीजन में? हाफ रीजन में. अभी गिवन फंक्शन नॉर्मलाइज है, यस और नो? क्यों? क्योंकि here we getting the root 2 by a. जब हम प्रॉपरली देखेंगे तो हाउ टू गेटिंग द रूट 2 by a हे सगळं आपण चेक करणार आहे. लक्षात आलं? आता बघा, रूट 2 upon a is a normalized wave function. Denominator part, no need to write down this one. Means simply, what is the probability? Probability integration psi star psi dx formula. Limit x1 to x2. Okay, lower limit, higher limit. Suppose आपल्याला probability find out करायची. In which region? 0 to L by 2 region. 0 to L by 2 region. Okay, then probability is equal to how much then? Limit 0 to L by 2. Now given function is a real function, imaginary function? This function is a real, imaginary? हे रियल आहे की इमॅजिनरी? यामध्ये आय दिसतोय कुठे तुम्हाला? नो. Then this is a real, imaginary? Real function. Then sin psi star r? Function is real. Function real. Psi star is equal to psi. Function imaginary. Psi star is not equal to psi. Okay. Now given function is real, then psi and psi star both are same. Okay, बोलिए psi star psi. Root 2 upon a sin n pi x upon a into, okay, first this is a psi star. What is the psi? Also same. Root 2 upon a sin n pi x upon a into dx. Okay, this is psi star, this is psi. Root 2 upon a 2 by a. Lower limit 0, higher limit L by 2. Sin into sin square n pi x upon L into dx. Okay. How to solve this integration? We know that sin x integration is minus cos x. Then what is the sin square theta integration? This total part is nothing but theta. Yes. Okay, yes. Minus cos square. Sin square. Suppose what is the sin square derivative? Sin square theta derivative is how much? 2 times of sin theta into cos theta. Then what is the sin square integration? No, this is not a derivative, the integration. Yes, बोलिए integration. Okay, how to solve this one? See here, simple. Sin theta or sin 2 theta derivative is simplest one, or sin square theta derivative is simplest one? नहीं derivative. Sin 2 theta value is a 2 times sin theta into cos theta. Yes or no?
but sin square theta derivative is the simplest one, or sin theta 2 theta is the simplest one? Sin 2 theta derivative is a cos 2 theta 2 into cos 2 theta. Which one is the simplest one? Second one is the simplest one as compared to First. why? Because here power is more than 1. Power is 1 is simplest one as compared to the power is 2. Similarly, here also use this trick. Here power is 2, convert it in the form of 1. पावर 2 है, इसको 1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? गामा तो 0 टू इंफिनिटी गामा 1 मतलब इसको कोई कुछ लिख सकते हैं ऐसे जैसे sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज sin 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा, ऐसा कुछ फार्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा को हम पावर 1 में लिख सकते हैं? ऐसा कुछ फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू समथिंग पावर इज 1? तो पर फिर cos स्क्वायर फिर से पावर 2 ही आएगा. sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. हाँ ठीक है ना, सही बात है, लेकिन फिर पावर 2 ही हो गया ना. हाँ पावर 1. ऐसा कोई फॉर्मूला है कि दिस पावर इज 1 मतलब सम कैसे? ठीक है, फिर अब भी वही हो गया ना. ऐसे तो अलग थोड़ी फाइंड आउट कर सकते हैं sin थीटा इंटीग्रेशन नेक्स्ट sin थीटा इंटीग्रेशन. देखिए ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है sin स्क्वायर sin 2 theta is nothing but sin 2 times of sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. sin स्क्वायर थीटा के लिए पावर 1 और cos स्क्वायर थीटा के लिए पावर 1. फॉर्मूला डायरेक्ट आई थिंक 11 12 को हो गया होगा शायद. हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला से देखो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू याद आ रहा है क्या? देखिए 1 माइनस डिवाइडेड बाय 2 समथिंग इज हियर और cos square theta is equal to cos square theta is equal to 1 plus something upon 2. What is the something? What is the something? Sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta upon 2. And cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta upon 2. Okay, always memorize these two formulas. What is the sin square theta value? 1 minus cos 2 theta upon 2. What is the cos square theta? 1 plus cos 2. Okay, sin square 2 theta, then sorry. 1 minus 2 cos 1 minus 2 cos 2 theta upon 2 कैसे बाहर आएगा? Here is theta, here is a 2 theta. Here is theta, here is 2 theta. Here is a sin square 2 theta, then 2 theta. 4 theta. 4 theta. अरे समझ, यह तो थीटा 1 थीटा है ना, तो ये कितना बन गया? 2 थीटा. Here is a 1 theta, this become 2 theta. यह 2 theta already है, तो here 1 minus 4 sorry cos 4 theta upon 2. बाकी कुछ चेंज नहीं होगा. Yes, cos square 8 theta. 1 cos में प्लस, sin में माइनस, रिमेनिंग एवरीथिंग विल बी सेम. 1 minus 1 plus cos 16 theta upon 2. Okay, बोलिए sin square n pi x upon a. 1 minus cos 2 n pi x upon 2. 1 minus cos 2 n pi x. 2 n pi x upon a divided by 2. Is this total part is nothing but theta? Okay, cos square 4 n pi x upon a. 1 plus cos 4 into 2 8 n pi x upon a divided by 2. आ रहा है समझ में? साइन स्क्वायर को पावर 1 में लिख सकते हैं. Yes, how? Sin square n pi x can be written as
1 minus cos 2 n pi x upon L divided by 2. Okay. What is the probability? Limit is 0 to L by 2. Okay. Root 2 upon a we can take outside. 2 upon a into sine square n pi x upon L into dx. Okay. 2 upon a we can take common out. Limit is 0 to L by 2. Sine square theta can be written as 1 minus cos 2 n pi x upon L divided by 2 into dx. Sine square theta. Okay. Next, anything get cancelled? Which part get cancelled? 2 get cancelled. This is a L, huh? This is not a L by 2. मतलब this is 2 by L. Huh? एकच घ्या कोणताही नोटेशन. Both are same, A and L. 2 by L. नहीं तो शेवट कैंसिल करता ना प्रॉब्लम होईल. Which part get cancelled? 2 get cancelled. 1 by L. 1 by L. Limit 0 to L by 2. Into dx. Minus cos 2 n pi x upon L into dx. Limit is 0 to L by 2. What is the dx integration? Dx integration x, or 1 dx integration is x. 1 by L. X lower limit 0. Higher limit L by 2 minus cos theta. Cos theta plus sine. Sine 2 n pi x upon L divided by 2 n pi upon L. Okay, lower limit 0, higher limit L by 2, and this is common for both the parts. 1 by L. Substitute higher, lower. 1 by L, higher L by 2 minus 0. Next, second, minus L upon 2 n pi. बोलिए higher sine 2 n pi upon L into L by 2. X is replaced by this value. Okay, x is replaced by this higher limit minus sine 0. Sine 0. Sine 0. Sine 0 cos 90. Sine 90 cos 0. Sine 45 cos 45. Sine 30 cos 60. 1 by 2. Sine 60 cos 30. ये पेयर याद रखिए. Read all the answers. Okay. बोलिए second part 0. L get 2 get. What is the value of sine n pi? What is the value of sine pi? 180. Sine pi. Pi is 180. Yes. Sine 180. 0. Cos 180. 1. Minus 1. Okay. Sine 2 pi. 360. Cos 3. Sine 360. 0. Okay. मतलब sin 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi is equal to how much? 0. और बॉक्स सिस्टम में n वैल्यू कौन से अलाउड होते हैं देखिए. बॉक्स n वैल्यूज 1, 2, 3 एंड सो मतलब दिस बिकम sin 1 pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi, all n pi values. All n pi values 0 because n is equal to how much? 1, 2, 3. There is a 1 by 2, 3 by 2 फॉर्म होता तो कुछ चेंज भी आ सकते. अरे समझ में like that. What is this limit then? Substitute here limit, then this value getting 0. Okay. The second part, second whole part 0. Yes or no? Second whole part getting 0.
This is equal to how much? 0. Focus on this one. L by 2, L by 2, sorry, L get cancel. What is the probability? 0 to A by 2. 0 to 1 by 2 is 1 by 2. Okay. Next. Same. System is same. System is same is box. What is the wave function for box? Box wave function. अभी तो बोला ना हमने रूट 2 अपॉन ए साइन जनरल n पाई x मतलब हमें पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए नहीं फाइंड आउट करें जनरल सिस्टम के लिए 0 टोटल लिमिट 0 इज लेस देन x इज लेस देन अभी ये लिखा है तो ये लिखिए ओके 0 टू a फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी सपोज 0 to a by 4 a by 4 okay given function normalize not normalize given function is normalized not normalized root 2 upon m matlab given function is normalized. What is the lower limit? 0 a by 4 denominator part 1 because given function is normalized. Sine into sine sine square n pi x upon a into dx. ये समझ में आ रहा है? 2 times sine to sine to psi star psi dx. Okay. Root 2 upon a we can take common out. How to solve this integration? Sine square power is 2. We need to convert 2 into 1. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर? अभी तो मैंने बोला सेम बोलिए 1 minus cos 2 theta upon 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta upon 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta upon 2 okay 1 minus cos 2 n pi x upon a divided by 2 into dx okay 2 get 1 by 0 to a by 4 first part dx second part no, only second part 1 minus 2 cos 2 n pi x upon a into dx बोलिए फर्स्ट इंटीग्रेशन 1 by a हाँ? x to the power a by 4 a by 4 x to the power a by 4 सिंपल इंटीग्रेशन x only okay lower limit 0 higher limit a by 4 minus cos integration sin a upon 2n pi okay into sin 2n pi upon a into x x lower limit 0 higher limit a by 4 okay substitute higher minus lower a by 4 हाँ बोलो a by 4 minus 0 minus a upon 2n pi common sin 2n pi upon a into a by 4 minus sin 0 sin 0 0 a get 2 pi 0 pi sin pi sin n pi by 2 okay for ground state n is equal to ground state n is equal to क्या होता है 1 होता है स्टार्टिंग 1 नेक्स्ट 2 तो ग्राउंड स्टेट के लिए निकालते हैं n is equal to 1 then sin pi is 1 so n pi है 2 pi थोड़ी कर n is equal to 1 then so sin pi is equal to 0 कैसे so relative is 0 तो पूरा टर्म 0 से है right second part is equal to 0 what is the first part
So one I know. This is equal to how much? One. Zero, zero. One. One. 1 0. One. One. A gate, Cancel. 1 2 gate. Cancel. What is the remaining? Sin pi upon 2. Sin pi by 2 means Nine. Sin 90. Sorry. Sin 180 degrees, so it is 0. sin pi by 2 means Sin pi by 2 means 90 degree. 90 student. sin 180 upon 2 means sin 90. Sin 90 is equals to 1. Sin 91. मतलब first part will be survived, second part getting 0. So this is equal to how much? 1 upon a. A by 4 minus a upon 2n. Only 2 pi. क्यों 2 pi? Because it's 1. n is equal to 1 ले रहे हैं हम. Okay. Which part get cancelled? Let's go calculate. A get cancelled. Yes. Then this is equal to how much? Probability in which region? 0 to A by 4. a by 4. How much? 1 by 2. Sorry, 1 by 4 minus 1 upon 2 pi. अब मुझे बोलिए सिंपल कि suppose this is a total system 0 to a. What is the total probability? 1. Total probability 0 to a. 100%. 1. Okay. 0 to a. 1. 0 to a 1. Okay. 0 to a by 2. 1 by 1 by 2. 0 to a by 4. 1 by 4. How much? 1 by 4 ही आना चाहिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली 1 by 4 minus 2 pi. 1 by 4 माइनस 1 by 2. 1 अपॉन 4 पाय. लक्ष देत आहे म्हणजे क्वांटम मेकॅनिकली तुम्ही जे थिंक करताय तसं येईलच असं नाही. लक्षात द्या. आपलं तर डायरेक्ट आहे ना, सिंपल आहे. मध्ये किती आहे? 100%. त्यात 50% असेल, यात 25% असेल, मीन्स 1 by 4. बट ऍक्च्युअल आन्सर इज 1 by 4 मायनस 1 अपॉन 2 पाय. एवढी प्रॉपर्टी असेल कोणत्या रिजन मध्ये? 1/4 मध्ये. जसं तुम्ही थिंक करता की 25% तर 25% असणार नाही. नाही. लक्षात आलं? सिंपल आहे. आता मला सांगा, हे हा पेन आहे, मी यावरती स्ट्राईक केला. ओके, अप टू इथपर्यंत व्हॉट इज द प्रॉपर्टी? सपोज एवढा रिजन आहे, इथून इथपर्यंत मी स्ट्राईक केला. व्हॉट इज द प्रॉपर्टी अप टू हिअर? 100%. इथून इथपर्यंत इथं स्ट्राईक केला ना मी हा पेन. ओके, तर 100%. बरोबर. आता या बोर्ड मध्ये हा पेन असण्याची प्रॉपर्टी किती? बोर्ड मध्ये आतमध्ये हा, आता पेन कुठपर्यंत जाईल? अप टू सरफेस. आतमध्ये हाऊ मच? 0. बट क्वांटम मेकॅनिकली इट हॅज सम फायनाइट प्रोबॅबिलिटी. लक्षात आलं? आता आपण भिंतीवरती मारला, काय आतमध्ये आपला हात जाण्याचे चान्सेस काही नाही. बरोबर आहे. पण आता जर एखादी वेव्ह आपण यावरती इन्सिडेंट केली, बरोबर आहे, याची पॉवर जी आहे दिस इज अ लेस देन दिस पोटेन्शियल. त्याचा अर्थ काय की 100% दिस इज अ रिफ्लेक्ट. बट क्वांटम मेकॅनिक्स से दॅट सम प्रॉपर्टी दिस वेव्ह पेनिट्रेट दिस वॉल. लक्षात आलं? सपोज हा बोर्ड आहे, यावरती मी काहीतरी फोर्स अप्लाय केला, दिस एनर्जी इज लेस दॅन दिस एनर्जी. येस सर ना? तर सिंपल आपण सांगणार की यामध्ये काही चेंज होणार नाही. पण जरी एनर्जी कमी असेल तरी ही वेव्ह या रिजन मधून पेनिट्रेट करू शकते. लक्षात येते? इट हॅज सम फायनाइट प्रोबॅबिलिटी. सपोज दिस इज अ वेव्ह. ओके, दिस पोटेन्शियल इज बी. ओके, and energy of this wave is E. This is incident on this one. Actually, suppose energy is less than potential. Energy is less than potential. Then here we're getting the 100% probability. Here probability is equal to how much? 0 classically. But quantum mechanically, here probability is not equal to 0. It has some finite value. लक्षात येत आहे? हे क्वांटम मेकॅनिकली. ऍक्च्युअली इथं जायलाच नाही पाहिजे वेव्ह. का? तर एनर्जी या पोटेन्शियल पेक्षा जास्त आहे, सॉरी कमी आहे. ही जास्त असेल तर नो प्रॉब्लेम. लक्षात येत आहे? म्हणजे क्वांटम मेकॅनिकचे जे कन्सेप्ट आहेत हे ऍक्च्युअल क्लासिकल सारखे थिंक नाही करता येत आपल्याला. इथं आपण जनरल एक्झाम्पल पाहिलं ना की हिअर प्रॉपर्टी किती यायला पाहिजे? 1/4 यायला पाहिजे. म्हणजे ते किती?
1/4 मायनस 1/2. ओके, हे कधी पॉसिबल आहे? जर आपल्याकडे एन व्हॅल्यू कशी असेल, छोटी असेल तर. एन इज अ व्हेरी व्हेरी लार्ज. एन इज व्हेरी व्हेरी लार्ज. देन क्वांटम मेकॅनिक्स बिहेव लाईक अ QM behave like a classical. जर तुमच्याकडे एन इज अ व्हेरी व्हेरी लार्ज, ही एन व्हॅल्यू जर खूप जास्त असेल तर क्वांटम मेकॅनिक्स कसं बिहेव करायला लागतं? क्लासिकली. जसं आपण पाहिलं की बोर्सने काय सांगितलं? डिफरंट एनर्जी लेवल्स. ग्राउंड स्टेट -13.6, नेक्स्ट डिवायडेड बाय 4 म्हणजे 3.4. नेक्स्ट मग ह्या एनर्जी लेवल्स आहेत, यांचा गॅप काय होत जातो? कमी कमी. आणि फायनली काय होणार? These energy levels are overlap to each other. N is a very very large. These are discrete energy level. This is a continuous. Means quantum mechanics behave like a classical mechanics. N is a very very large. Actually, Quantum mechanics. N. कम होत जाते. नाही, actually quantum mechanics energy levels are discrete energy levels. Classical mechanics energy levels are continuous. बरोबर आहे. आणि बोर्स नुसार पाहायला गेला आपण तर ग्राउंड स्टेटला बघा हा डिफरन्स जास्त असतो. पण जसं जसं आपण इथं एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 जसं आपण हे व्हॅल्यू वाढवत जाऊ तसं तसं हा जो गॅप आहे हा काय होत जातो? कमी जातो. आणि एन इज अ व्हेरी व्हेरी लार्ज, लाईक मान की चली की इन्फिनिटी. देन दिस एनर्जी लेवल्स आर ओव्हरलॅप टू इच अदर. दिस क्वांटम सिस्टम बिहेव लाईक अ क्लासिकल. लक्षात आला? सेम सपोज तुम्ही सिंपल पेंडुलमचं एक्झाम्पल घेतलं. सिंपल पेंडुलम इज मुव्हिंग अलॉंग द डायरेक्शन. Here probability is the maximum minimum. सेंटरला probability maximum minimum. का तर इथं स्पीड इज अ व्हेरी लार्ज. इथं गेल्यानंतर काहीतरी काळासाठी तो स्टे होईल. तर probability is maximum. Means extreme position probability is the maximum. Mean position probability is the minimum. Yes or no? Quantum mechanics. Suppose ground state. आता हेच फंक्शन पाहिलं तर what is the wave nature? Probability nature is this one. ओके, मग आता ही झाली 0. दिस इज द विड्थ इज ए. आता या केसमध्ये वेर इज अ probability is a maximum? दिस इज अ mod psi square. mod psi square इज नथिंग बट probability. आताच पाहिलं आपण. ओके, वेव्ह फंक्शन असं असेल, probability is like that. ओके, सॉरी, वेव्ह फंक्शन सुद्धा या केसमध्ये असंच येईल. जर तुमच्याकडे n इज इक्वल टू घेतला तर वेव्ह फंक्शन कसं येईल? वेव्ह फंक्शन इज लाईक दॅट. पण या केससाठी probability कशी असणार? probability ऑलवेज पॉझिटिव्ह. दिस इज नेव्हर निगेटिव्ह. वेव्ह फंक्शन असू शकतं. Here n is equal to 1. Here n is equal to 2. आता n is equal to 1 at that time, where is the probability is maximum? At which point probability is maximum? या पॉइंटला तुमची probability maximum असेल, कारण हा ऍक्सिस probability दाखवतोय. बरोबर आहे. तर या पॉइंटला तुमची probability कशी असेल? मॅक्झिमम. मीन्स ऍट व्हॉट डिस्टन्स? a/2 डिस्टन्स. कसं ना? लक्षात आलं? या ऍक्सिस वरती काय घेतली आपण? probability घेतली आहे. दिस हाईट रिप्रेझेंट द probability. हिअर probability इज अ स्मॉल, लार्जर, मॅक्झिमम अगेन डिक्रीज. At center probability is maximum. Means this is a mean position. लक्षात आला? दिस इज मीन. दिस इज एक्स्ट्रीम झाली ना ह्या केसची. बॉक्स सिस्टम साठी हा बॉक्स आहे आपला. आता बघा, n इज इक्वल टू 1 घेताना हिअर probability is maximum, here minimum. Classically mean position minimum, extreme position here extreme position, क्वांटमच्या टोटली रिव्हर्स. बरोबर. पण आता n इज इक्वल टू घेतलं, probability shifted at again here a/4 and 3a/4 ला झाली. जर ना आता जसं जसं आपण काय करू, n वाढवत जाऊ तसंच ही जी हाईट आहे दिस विल बी इन्क्रीज. Now n increases, probability shifted at extreme position. Yes or no? Means quantum system behave like a at a n is a very very large. लक्षात आलं? हा. नेक्स्ट, व्हॉट इज अ probability in which region? आता आपण पहिल्यांदा फाइंड आउट केली probability in 0 to a/2. How much? 1/2. 0 to a/4. How much? 1/4. Next, probability
a by 2 2 3a by 4 करता येईल सॉल्व किंवा 3a by 2 2 3a by 3a by 4 2 a 3/4. how much 3a by 4 means how much parts here is a 50% part here is a 3a by 4 here is a a means 25% तो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 1/4 minus 1/2. ये 1/4 आनी चाहिए ना दिस इज अ 25% पार्ट ना सिस्टम का तो 1/4 आना चाहिए तो कितना आ रहा है देखिए ट्राई टू सॉल्व दिस वन सेम मेथड व्हाट इज द वेव फंक्शन √2/a sin n pi x upon a सपोज मान के चलिए अभी ग्राउंड के लिए हम फाइंड आउट करें तो pi x upon a लिमिट 0 is less than x is less than हे टोटल लिमिट झालं आता प्रॉपर्टी कोणत्या रिजन मध्ये फाइंड आउट करायची आपल्याला प्रॉपर्टी वी कॅन फाइंड आउट इन 3a by 4 to a yes or no 2 upon a we can take common out limit 3a by 4 to a into sin square pi x upon a into dx sin square can be written as 1 minus cos. sin square can be written as yes 1 minus cos theta. 1 minus cos 2 pi x upon a divided by 2 into dx. Yes. 2 to get Cancel. cancel 1 upon a A dx integration x x lower limit 3/4 a minus a upon 2n pi sorry a upon 2 pi cos 2 pi x upon a lower limit 3a by 4 higher limit first part 1 upon a minus 3a by 4 second one a upon 2 pi higher a get cancel cos 2 pi minus sorry cos का इंटीग्रेशन साइन आएगा ना sin 2 pi x upon a here is cos na cos का इंटीग्रेशन sin okay so this become sin 2 pi a get cancel minus sin 2 pi upon a into 3a by 4 a get cancel first part 0 second part 0 कैसे होगा Second part 0. Second part 0. 0 तो बनेगा sin 2 pi. नहीं 1 2 गेट कैंसल 4 के लिए Yes. हाँ तो बचेगा कितना 6. 0 ही होगा ना 6 pi. 6 pi by 4 6 pi by 4 है. हाँ तो 6 pi by 4 मतलब 3 by 4 3 by 2 हाँ तो sin 3 pi by 2 sin 3 pi by 4 sorry sin 3 pi by 2 270 1 प्लस 1 माइनस 1 minus 1 कैसे आएगा minus 7. बोलिए प्लस 1 माइनस 1 270 समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है Yes, sir. a गेट कैंसिल 1 2 गेट कैंसिल मतलब sin 3 pi by 2 minus 1 वो वाला minus लगेगा ना. पहले तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा वो Yes. लेकिन sin 3 pi by 4 वाला प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है Minus 1. हम्म Minus 1. Minus 1. 1 आएगा. 1. a गेट हाँ 4 minus 3
4 minus 3 1. 1 1 upon 4 मतलब a by 4 a get cancel 1 by 1 by 4 plus 1 upon 2 pi 1 upon 2 pi okay Which cancel? which cancel 1 and with minus 1 sin 2 7. 1 ही है ना? 1 आ गया तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा फिर हाँ समझा। ओके यस अभी एक सॉल्व करिए आप इसमें सपोज एल बाई ए बाई 4 टू सॉरी ए बाई 2 ओके हाँ ए बाई 4 टू 3 a by 4 equation same box root 2 upon a sin n pi x upon a root 2 upon a root 2 upon a sin is equal to how much root 2 upon a sin n pi x upon a or ground state n is equal to 1 psi is equal to root 2 upon a sin pi x upon a limit 0 is less than x is less than a find out the probability in which region 0 sorry a by 4 to 3 a by 4 नीचे a by 4 आएंगे ना? नहीं ऊपर आएंगे a by 4 to 3 उसका खुद ही बोला 5 स्टारिंग साइज खुद माइनस cos cube थीटा बड़ा